Narayan Singh Dev. Honorable Member Shri Kalikesh Narayan Singh Dev to move the Select Committee motion. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that the Odisha Goods and Services Tax Amendment Bill 2024 may be referred to a Select Committee for examination. The committee may be constituted comprising of the following members: Honorable Chief Minister and Finance Minister as Chairman, Kalikesh Narayan Singh Dev, Shri Pratap Keshri Dev, Shri Ganeshwar Behera, Shri Niranjan Pujari, Shri Ramachandra Kadam, Dr. Raja Nekka, Shri Om Prakash Mishra, Shri Saroj Pradhan, Shri Govind Chandra Das, Shri Siddhant Mahapatra, Shri Naveen Jain. Moved. We will take up the consideration motion and Select Committee motion for discussion together and dispose of them one by one. Now, Honorable Member Shri Kalikesh Narayan Singh Dev to speak. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम स्पीकर। मुझे जब पार्लियामेंट थी मोर सौभाग्य थिला कि मु फाइनेंस कंसल्टेटिव कमिटी रे से समय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली अध्यक्षता रे जीएसटी बिल उपरे विस्तार रूप में डिस्कसन करथलो। We went through minute details to study and resolve areas of conflict and how we can bring roughly around 17 or 18 different central and state taxes unified into one goods and service tax. It was called at that time good and simple tax. What has resulted, madam, is the opposite of what the intention was. जो मान्यवर मुख्यमंत्री आज हाउस रे उपस्थापित रखले प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन टैक्स कथा I would like to bring to your attention, madam, this one nation one tax has 5 different slabs to it. Where is the question of calling it one nation one tax? If he had called it one nation 5 taxes, one could understand. The complexity and the complex tax structure which exists today in the GST is anything but simple. तार द्वारा आपण जदि देखिबे आज 14,000 पेंडिंग केसेस अछि कोर्ट्स रे हाई कोर्ट्स रे विभिन्न जगह रे काहे कि GST रो इंटरप्रिटेशन by the people who are supposed to adjudicate matters at the level of the district to ensure that the small scale business people get a simpler tax to work with has been completely defeated in the way it has been structured. Madam Speaker, मु मध्य जीएसटी रिटर्न भर्ती करूली किछ दिन आगु मोर व्यक्तिगत जीएसटी रिटर्न मोर कंपनी जीएसटी रिटर्न 7 दिन लगला मते कहीं से वेबसाइट काम कर ना तार अर्थ कौन हम आम तो लेट फाइलिंग करूँ आम उपरे पेनल्टी हेब आम उपरे फाइन पड़ो आपन चिंता करंतु आमर जिला मान भितर जो स्मॉल टाइम ट्रेडर्स अच्छी तांको उपरे को प्रकार कंप्लायंस बर्डनटा पड़ुची जे मासको 50,000 टंका कमाउची 40,000 टंका कमाउची ताकू 20-25,000 टंका आज खर्च करबाके पड़ुची गोटे जीएसटी टैक्स अकाउंटिंग रखिबा लागि जदि माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हिसाब से जहाँ प्रस्ताव देइछंती गोटे प्रस्ताव देई थांते कि आमे केमिति ए जीएसटी को सिंप्लीफाई करिबा केमिति आमे लोकों को ऊपर बर्डनटा कम करिबा और जो उद्देश्य थिला केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व रे कि आम गोटे वन टैक्स आनिबा गोटे सिंप्लीफाइड टैक्स आनिबा ताकू आउ स्थिर करबा लागि प्रस्ताव देथांते आमे समर्थन करथांतु परंतु तार जागा रे जो प्रस्ताव रखिछंती it is going to increase the burden of the compliance to the small scale people. Madam Speaker, the Honorable Chief Minister has amongst the 5 proposals he has laid for consideration for the House has in proposal number he has made mandatory IST registration. The bill which he proposes, the amendment bill, has expanded the definition of ISD and it has revised the distribution rules which are yet to follow. So we are passing a bill
without understanding how it will be applied and what the impact will be on the common small scale businessman. Madam Speaker, आमे registration अपेक्षा जदि तांको declaration रे आमे प्रावधान दे थांतु voluntary declaration रे से जिनिसटा आमर ओडिसा रो बिजनेसमैन को सहाय्य करथांता टबैको और पान मसाला लगी इनपुट क्रेडिट नेबा लगी मु जानी छी उद्देश्य अच्छी कि से जो टैक्स एविजन होची ताको धरिबा लगी उद्देश्य कहा होची परंतु वास्तव रे मैडम आमे इनपुट टैक्स क्रेडिट नेबा लगी सहज रास्ता देखौछु पान मसाला गुटका और टबैको रो प्रोड्यूसर्स मान को ए जिनिसटा ओडिसा रे उत्पादन नहीं हुए मैडम ए जिनिसटा ज्यादातर गुजरात रे उत्पादन हुए टबैको फार्मर्स सेठ अछंती गुटका मैन्युफैक्चरर्स यूपी और दिल्ली पाखापाखि अछंती बिहार रे अछंती तेनु ओडिसा संगरे ओडिसा पाई ओडिसा रो हित लागी ए बिलटा अछि कि मु माननीय मुख्यमंत्री को पचराबा के चाहे से कहउछंती गोटे मिरर एक्ट अछि एटा but I think maybe he has been briefed wrongly by the people who are supposed to brief him. Madam Speaker, any rectification, even though passed by the GST Council, the GST Act is very clear. It has to pass by 3/4 of the weighted votes of the GST Council, which effectively means center 1/3 vote achi GST Council re, states 2/3 vote achi GST Council रे तार अर्थ कौन सी रेक्टिफिकेशन पास करिबा लगी सेंटर जदि प्रावधान रखिबो प्रस्ताव रखिबो 50% स्टेट ताकू पास करिबा कथा मु बुझी थाती कि जदि गुजरात पास करथांता यूपी पास करथांता प्रावधान को आमर टबैको गुटका और पान मसाला वाला को सहाय्य करिबा लगी परंतु ओडिसा रे कोन उत्पादन होछि गुटका रो पान मसाला रो सिगरेट रो केते पैसा आसुची केते पैसा जाउची केते टैक्स टा से माने धरिबे ओडिसा पाई से जिनिसटा टिके स्पष्ट भाव रे माननीय मुख्यमंत्री हमको कहिबे तार अगेंस्ट दैट जो प्रकार हेरासमेंट हेबो आमर ओडिसा रो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन रो मिस इंटरप्रिटेशन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर्स एट द ग्रास रूट लेवल इज रैम्पेंट. मैडम स्पीकर मु गोटे उदाहरण देबी आपको. जीएसटी रे किछि गुड्स एग्जेम्प्ट अछि से एग्जेम्प्ट गुड रो रिवर्स चार्ज मेकानिज्म द्वारा एबे आजि रो दिन रे ओडिसा रे विभिन्न जिल्ला रे ऑफिसर माने आईटीसी रो रिवर्सल चाहुछंती जो आरसीएम टा आपण आजि ए बिल रे भी प्रस्ताव देइछंती. जदि जीएसटी कलेक्शन हेइनी तार रिवर्सल रो प्रश्न कोठे आसुची सेटा खाली पेपर वर्क अछि मैडम. आ तार बहाना रे आमे देखिछु छोट छोट बिजनेसमैन कहार माने गाड़ी रो सर्विस सेंटर थिबो कहार डीलरशिप थिबो 7 कोटी 10 कोटी 15 कोटी टंकार डिमांड रखी करी से जीएसटी ऑफिसर माने तांकू छाड़ी दउछंती अपील करिबा लागि. कहीं केंद्र सरकार जो प्रावधान थिला गोटे अपेलेट ट्राइब्यूनल बनेबा लगी सेटा आज दिन तक है नहीं. अपील करिबा लगी 20% 10% तार देबा के पड़ुची. आमर गाँ गौली रे ओडिसा रो गाँ गौली रे केते एमती बिजनेसमैन थिबे जहा द्वारा ए जिनिसटा संभव हेबो. दया करी माननीय मुख्यमंत्री ता उपरे गुरुत्व देबे. आमको सबु जिनिसटा पास करबा निहाती दरकार नाइन. जो जिनिसटा ओडिसा हित रे अछि सेडा को आमे जदि गुरुत्व देबा ता उपरे जदि सरकार ता गुरुत्व देबो और गोटे इंडिपेंडेंट स्टैंड नेबो फॉर द बेनिफिट ऑफ ओडिसा. वी डू नॉट हैव टू फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम दिल्ली. वी डू नॉट हैव टू फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम गुजरात. वी नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओडिसा. मैडम स्पीकर, माननीय मुख्यमंत्री कहते ओडिशा रे 6 थर जीएसटी एक्ट एमेंड होइछि परंतु 54 टाइम्स द काउंसिल इज सैट इन दिल्ली एंड न्यू प्रोविजन्स आर मेड कंटिन्यूअसली, sometimes with retrospective effect.
आपण देखंतु आपणकर कन्स्टिट्युएंसी रे मध्य छोट छोट बिजनेसमैन थिबे 40 लाख टंकार गोटे बैरियर अच्छी माने जो मानकर टर्नओवरटा 40 लाख टंका तले को थिबो से माने जीएसटी देवा दरकार नाइन पर जो माने इंटरस्टेट सर्विसेज दौरान जार पाए आज बिल से आनी तांको बाध्य होई करी जीएसटी रो प्रोविजन करिया पड़ुछि और तांको पाए मध्य रजिस्ट्रेशन आपण माने आज मैंडेटरी बनाउछन्ति जो प्रकार कंप्लायंस बर्डन हैरेसमेंट आउ जो प्रकार एक्सपेंसेस से माने बेर करिवे मोर हिसाब रे मैडम इट्स एन अनफेयर बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्टली मैडम आई नो आपण टाइम रो प्राबंध देखौछन्ति मैडम when the GST Act was promulgated, there are intricate conflicts between the way it is interpreted and the manner in which it should have been adjudicated at the district level or from the Principal Commissioner's office. The understanding at the national and state level differs very much from the understanding at the district level of the adjudicating officer. It is expressly important that the government clarifies the GST Act for the sake of its own officers. जो प्रकार रे ब्लैक एंड व्हाइट रे एक्ट ता पढ़िबा कथा ब्लैक एंड व्हाइट प्रावधान ता स्पष्ट भाव रे ऑफिसर माने बुझिबा कथा ताकू ग्रे रखी करी ताकू डबल इंटरप्रिटेशन पाई रखी करी आमे आमर अर्थनीति को our economy is suffering madam our people are suffering officers will take the safe route they will in most cases give a fine and wait for you to go to high court that is a safe route for them and as long as the act remains grey people will keep running to them for adjudication if the act becomes black and white if the act becomes absolutely clear and the adjudicating officers themselves are able to process the cases in front of them this dichotomy will not exist. Madam Speaker, it is with this suggestions that I want to leave the Honorable Chief Minister in his capacity as the Finance Minister, that the bill needs to be examined further, not just in the case of the manner in which these RCM and the ISTs are being proposed, as a whole, and the Odisha needs to take a wholesome view on this matter. This is an evolving act, madam. It was done with unanimous support of the previous government also. Everybody wants a simple GST. Everybody wants an implementable GST. It is a fallacy to believe that by making rules stringent, you will catch evaders. In fact, it is my own belief, if you simplify the act, if you make it easy for compliance, if you make it voluntary, which is what is happening with the income tax department now, madam, the incidence of tax will increase, Odisha will benefit, the country will benefit, and with that, madam, I would once again request the Honorable Chief Minister to send this bill to the Select Committee and let us have a thorough examination under the House's provision. Thank you, madam.